Hello and welcome. This is Dr. Mohammed Shaukat Ansari from your lovely channel Learn English with Shaukat Ansari. Before I proceed or go into the slides, I would like to place a reminder to all of you that you subscribe to this channel. Here in this special teaching video, I am going to discuss personality development and communication skills, and this will be part 1. It means part 2 or part 3 I will be discussing in the coming videos. Personality development, my dear lovely students, is very important for all of us, and when we talk about personality development, we must understand, after all, what personality really is. Personality cannot be defined as a single thing. Rather, it includes the external beauty as well as internal beauty and virtues or capabilities. In order to understand personality in depth, we have to try to understand it in this way. Personality means external personality and internal personality. Similarly, attractive personality. Beauty of individuals' external appearance plus beauty of individuals' internal virtues. This is supposed to be attractive personality. The combination of the beauty of individuals' external appearance and the beauty of individuals' internal virtues, if we combine these elements together, it means this is attractive personality. The external beauty of an individual includes his physical build and his beauty, or I can say his physical attraction. His features, his physical movements, his attire, I mean dress, etc. All those things which display his external beauty. The internal virtues of a person are those attributes due to which his or her true self is reflected and which enhance his power or her power to attract people around him or her. These internal qualities and add glory to the personality of the individual. A person scales the peaks of success, P-E-A-K-S, peaks means unchai, peaks of success only because of his internal qualities. To sum up, in making an individual successful, external beauty has a 10% role, whereas internal beauty has 90% role. Among the internal qualities of a person, his or her character, behavior, attitude, perception, way of looking at events, way of communicating, and way of working play an important role. मैं इस सेशन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 की हैसियत से डिस्कस करने जा रहा हूँ. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स ये स्किल इन्हांसमेंट के तहत बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्रिस्क्राइब्ड है. ये एलन मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हैं, उन्हें भी प्रिस्क्राइब्ड है. और ये स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, स्किल एडवांसमेंट कोर्स के तहत ये आता है. और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सही माने में इंसान के पर्सनैलिटी को उजागर करता है और कम्युनिकेशन स्किल उसमें चार चांद लगाता है.
हम किस तरह से किसी से बात करते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं या किसी को कन्विंस कर पाते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में हैं, तो वहाँ पर इंटरव्यूअर्स के सामने आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या आपका अंदाज होता है, क्या आपका वर्बल और नॉन वर्बल वर्क्स होता है वहाँ पे, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके अंदर एबिलिटी कैसा है, आप मेंटली कितना फिट हैं, इमोशनली कितना फिट हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका परसेप्शन कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तहत आता है। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, यह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 के तहत मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि पार्ट 2, पार्ट 3 भी मैं अपलोड करूँगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारे लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। फर्स्ट, I would like to ask you to look at this picture, personality development and communication skill. Here, a person is speaking and 4 students or 4 listeners are there. And the person seems to be under commanding position, and he is trying to convince the 4 listeners. So active listeners are there and active speaker is there, and the interaction is going on and very effective communication is going on. And the person who is on the stage, he is a good person in the sense that his personality, his attire, his confidence reflect throughout. आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि किस तरह से एक स्पीकर अपनी बातों को रखने जा रहा है और रख रहा है, और कैसे 4 लिसनर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक लिसनर इज आस्किंग द क्वेश्चन ऑल्सो, एंड बहुत ही अच्छे माहौल में बातें हो रही हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, और जो स्पीकर है उसका जो पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ही इज इन फुल कमांड एंड ही इज अंडर फुल कॉन्फिडेंस. Fully he is confident, he is looking very confident, he is smart as well. Here I would like to add something more, that going up in life is everyone's ambition. If not a goal, it is natural, it is desirable. It appears to be easy, but it is not so. It does not seem to be difficult, but in reality it is. The going up needs steps like the ones in a ladder. Everyone knows how to climb the steps, yet everyone does not reach the top. हर आदमी आगे बढ़ने का कोशिश करता है, एम्बिशन रखता है, डिजायर रखता है, उसका रिक्वायरमेंट भी होता है, लेकिन उसको लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने सक्सेस के टॉप पर, अपने सक्सेस के पीक पर क्लाइंब नहीं कर पाता है, और उसका रीजंस होता है, द रीजंस कुड बी मेनी बट द फैक्ट इज वन. ऑन देयर वे अप people keep sleeping, that many are not aware of it is besides the point. Sleeping is a natural phenomena. It can happen to anyone, anywhere, and at any time. Those keen to reach the top, however, try to find out the reasons and the factors for sleepage. If one knows the causes, the remedies can be found out. It is as simple as that, but it requires knowledge, effort, perseverance, and above all, the will. The winners do so. It is as simple as that. बस हमें पेशेंस, कॉन्फिडेंस और कोशिश, ईमानदारी, सिंसियरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरह से हम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं.
Most of us want to be more confident and booming in our pursuits, but how many of us are taking the necessary steps to improve our personal development skills? Success in business, relationships, or personal goals requires a strong personality and excellent communication skills. So, in order to get success, in order to achieve the goals or the targets, we need to have a strong personality, and also we have to cultivate, we have to make excellent communication. It means communication skills and personality development are a part of each other and they are complementary. Here, I would like to tell you the importance of personality development and the importance of communication skills. How do you communicate? How do you interact? How do you place your ideas among the persons with whom you are talking to? This is an art, this is a technique, this is a style, and this is really a guarantee for success. As we explored in this lesson, personality development and communication skills go hand in hand with success, and a big question how we can develop them for positive results. We need to explore how we can develop our personality and how we can improve our communication skills. This is very important, and this, if you understand and if you pursue things towards getting this target, it means you are a successful person. Let's consider what are personality development and communication skills and what are their importance. It means we have to know what is personality development, and also we have to know what are communication skills, and also we have to know what is the importance of personality development and communication skills. As I have told you that personality development and communication skills go hand in hand with success, and how can we develop them? It is a big question for all of us. मैं एक बार फिर आप लोगों से बता दूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, और यह स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के तहत है, और ये अगर हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रेलिवेंट होगा. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ improving one's personality. It involves increasing self-awareness, developing positive traits and behaviors, and managing emotions. Again, I repeat, personality development is the process of improving one's personality. Personality development जो है वो अपने personality को improve करने का एक process है. It involves increasing self-awareness, और इसमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए. डेवलपिंग पॉजिटिव ट्रेट्स, और अपने अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए जो पॉजिटिव ट्रेट्स डेवलप कर सकें, अच्छा बिहेवियर्स को डेवलप कर सकें, और अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें, कंट्रोल. अब कभी कभी होता है कि कोई बात हुई और आप बहुत एंग्री हो गए, तो नेगेटिव हो गया, वहाँ पे सारा बात नेगेटिव हो गया. सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू manage your emotions. The importance of personality development lies in its ability to help individuals reach their full potential. A well-developed personality can lead to
success in all areas of life, from personal relationships to professional achievements. आपका जो व्यक्तिगत जो रिलेशनशिप है वहाँ से लेकर के जो आपका प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है, हर जगह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ये एक एबिलिटी है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है. Furthermore, I would like to tell you that personality development can help people overcome challenges and setbacks, manage stress and make better decisions. Self-development refers to improving oneself emotionally, mentally and physically. Interpersonal skills are the ability to interact effectively with other people. आपका व्यक्तित्व का विकास इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे कैसा हो, यही आपका व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बातें हैं और आपके अपने इंडिविजुअल लाइफ में इसका मीनिंग है, इसका इम्पोर्टेंस. I have just told you that personality development and communication skills go together. If you are in a position to interact with others very confidently, very successfully, very effectively, very influentially, it means you are a successful person. Communication is a process of exchanging information between two or more individuals. What is communication? It is a process of exchanging information between two or more individuals. The process can be verbal, written, or non-verbal. It can be oral, it can be written, or it can be non-verbal, I mean with signals, with clues. The importance of communication in and personality development should be considered. It is vital in developing and maintaining relationships, achieving goals, and resolving conflict. Communication skills are also essential for self-awareness and personal growth. Here in this slide, I have already discussed that what is communication and what are communication skills. My dear lovely students, this is part 1, part 2 and part 3 I will be doing in the next teaching videos. Again, I must tell you that this is for the students of semester 2 under the course of skill advancement course or skill advancement scheme. Now the question is, vital question is, what is good communication? How a good communication can take place? Good communication, in my views, involves understanding the other person's point of view, being clear and concise in your messages, and active listener. यानी अच्छा कम्युनिकेशन तब होगा जब आप दूसरों के सेंटीमेंट्स को समझें और अपनी बातों को कहने में आप क्लियर हो, कॉन्साइज हो. कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षिप्त. कॉन्साइज हो अपने मैसेजेस को प्रेस करने में, और आप एक्टिव लिसनर भी हो. आप बहुत पेशेंटली लिसनिंग करें, आप क्वेश्चंस को समझें और बातों को समझें और मौका दें सामने के लोगों को बोलने का भी, और आप खुद भी बोलें और इफेक्टिव आपका स्पीच हो, इफेक्टिव आपका कॉन्वर्सेशन हो. Good communication also requires non-verbal communication skills such as body language and facial expressions. आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसा है, आप स्माइल के साथ बात करते हैं या नहीं, आपका आई कांटेक्ट बहुत फास्ट और बहुत डीप है या नहीं, ये सब नॉन वर्बल में आता है. आपका जेस्चर, आपका पोस्चर कैसा है, ये सब नॉन वर्बल में आता है. Personality development and communication skills can help you in all areas of your life
from personal relationships to professional success. Personal development can be seen in perspective of communication skills, and communication skills can be observed in the context of personality development. So both are complementary for each other. I mean one another. My dear lovely students,